ભરૂચ મોડેલ યુનાઇટેડ નેશન 2025નું ઉદ્ઘાટન મધુસૂદન રૂંગટાની અધ્યક્ષતામાં કરાયું. ભરૂચ મોડેલ યુનાઇટેડ નેશનનું ઉદ્ઘાટન શનિવારે રૂંગટા વિદ્યાભવન ખાતે થયું. કૂટનીતિ, ચર્ચા અને વૈશ્વિક જાગૃતિના માર્ગે યુવાનોની પ્રેરણાદાયી યાત્રાની આ શરૂઆત બની. કેમ્પસ ડિરેક્ટર કુલવંત મારવાલે રૂપરેખા આપી. ઉદ્ઘાટન સમારંભમાં મુખ્ય અતિથિ તરીકે કલામ સેન્ટરના CEO સૃજનપાલસિંહ ઉપસ્થિત રહ્યા. ફ્યુચર ઝોનના પ્રશિક્ષકોએ વર્ષભરની પ્રવૃત્તિઓ અને સિદ્ધિઓનું વિહંગાવલોકન આપ્યું. ત્યારબાદ મહાનુભાવો દ્વારા ફ્યુચર ઝોન બુકલેટનું ઉદ્ઘાટન કરાયું. પ્રથમ દિવસે UNGA, UNSC, WHO, UNHRC, UNICEF, લોકસભા, રાજ્યસભા, ગુજરાત વિધાનસભા ઉપરાંત નેશનલ અને ઇન્ટરનેશનલ પ્રેસ डिवीजन જેવી અનેક સમિતિઓમાં સર્જનાત્મક ચર્ચાઓ યોજાઈ હતી. आज यहाँ पर भरूच MUN यानी मॉडल UN का आयोजन हो रहा है और ये ऐसा पहली बार हो रहा है भरूच में। यहाँ पर 200 ब्रिलियंट बच्चे गुजरात से आए हैं, विशेषकर आसपास के क्षेत्र से, और ये करीब 20 स्कूल से हैं और ये सारे बच्चे दुनिया के अलग अलग देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स के रूप में यहाँ पर एक सम्मेलन कर रहे हैं। 2 दिन तक चलेगा और दुनिया में जो भी ज्वलंत मुद्दे हैं, जो ऐसे मुद्दे हैं जो दुनिया और देश को बदल रहे हैं, उन सारे मुद्दों को चर्चा करी जाएगी और ये पता करने की कोशिश करी जाएगी कि किस प्रकार से नए आइडियाज़ के ज़रिए हम दुनिया के जो पुराने इश्यूज़ हैं, जो दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट ला रहे हैं, गरीबी का इशू है, पोल्यूशन का इशू है, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे लाएं इसका इशू है, वर्ल्ड सिक्योरिटी का इशू है, हम इन सब को एक नई सोच, एक नए दृष्टिकोण से कैसे इनका समाधान निकाल सकते हैं, ये 200 बच्चे मिलकर के सॉल्व करेंगे।